enjoying in the categories of micro, small, medium enterprises. So by widening the definition, we are giving them a chance to grow without losing the benefits that they get as a MSME. And also this time we have given a government guaranteed loan up to 100 crores, 60% of which will be guaranteed. So there are immense lot of steps taken over the last few years, but this year particularly the extent to which government guarantee also goes to strengthen it will make a big difference to MSMEs. I'll check up with the secretaries if any of them have anything more to add. They can join in. I just wanted to Secretary DFS. Supplement. The last budget, we have two schemes were announced specifically for SME. One is to provide up to 100 crores for the SMEs under the special mention accounts. That we are getting it approved. And the second scheme was mutual credit guarantee scheme for the MSME, which was launched today by the Honorable Finance Minister. And then first loans were also distributed. And this budget, we have 2-3 things we have the Honorable Finance Minister announced in the budget. One is reclassification, both in the investment as well as turnover, so that the firms with a higher capital turnover and also the investment, they will be eligible under the SME sector for lending. That's one. The other is we also announced the credit enhancement for the guarantee cover that we have announced. And also we have announced partial credit guarantee scheme, which will be implemented by the NAFID for the minor enterprises. This also includes other corporates also, but everybody. So these are some of these things announced in the budget, in the last budget and this budget. One more thing which I would think that the Secretary DFS can mention is that we have given substantial money for development activities and for growth of MSMEs to the SIDBI itself. The SIDBI, being the Small Industry Development Bank of India, is very well placed as an institution to understand the credit requirements of MSMEs. The cycle of business which MSMEs go through is very different from the large businesses. And when public sector banks deal with it, they do understand, they extend it accordingly. However, when a SIDBI-like institution, which is otherwise a refinance institution, does it themselves, the understanding about the credit requirements of small and medium industries are better understood. So we have not only given them greater capital resources, but also announced in the July budget, which we will be following up, that SIDBI will now be opening up branches in every MSME cluster. So when units are present in a cluster, they don't have to go running to search for banks which can fund them. They can still do that. But they will also be SIDBI physically present in the cluster itself. Mr. Yash Jain. They've been finding other markets more attractive as compared to India. Is the government acknowledging that, and are you looking at steps to make the equity markets more attractive for the foreign institutional investors and hence retail investors also, because retail investors have been started to see mark-to-market losses in their portfolios now also. Second question, the measures announced to give relief to middle class on income tax, on income up to 12 lakhs was certainly welcome. But as we have seen, the classes are also upgrading. The lower middle class becoming middle class going higher. In that case, middle class is also the income over 10 lakhs. Do you think in the new tax regime there should be steps to give relief to people having income more than 12 lakhs also in the form of exemptions or rebate or any other way? Do you think that's also important to cater to that? Your second question first.
Rates have also been changed in this new regime. More favorable rates have been brought in, and more higher level or more incomes in the higher bands have also been brought into the lower bands, so that they'll benefit from a lower tax rate. So if you would only look at the rate charts that we've come up with, where the income bands and the rate applicable to them are also rehashed in favor of every taxpayer. So if you are talking of the new regime, the new higher incomes are coming into lower band, the rates for all of them have also been brought down. So on the question of your FIIs and the retail investors, it is true, and I thought you were implying it in your question itself, that FIIs also go out when they're able to, in a position to book for profits. Indian market today, Indian economy today, has an environment in which investments are also yielding good returns and profit booking is also happening. And I'm sure you would have seized that fact also. But I'll also ask Tuhin to say further on it. See, as you know, the FIIs keep moving up and down depending upon where they want to really park themselves. And it is not true that, the FPIs are really moving from one emerging market to another. I think the general thing is that there is a little bit of, whenever there is a global uncertainty, they would really go back where they actually come from. Largely, I think, as you know, basically back to US. So we have to take that. In terms of resilience, Indian markets have held, although there would be, any demand and supply impact would be felt. But these are the issues of temporary measures. If you really look at Indian economy, because eventually, the returns are obtained in the real sector, because the financial sector cannot really just be in a bubble. In the real terms, Indian economy is in a very good resilience, remains one of the fastest, in fact, the fastest large economy. And Honorable Finance Minister has taken a number of measures. If you really see, it's a very growth-oriented budget in which, we are really firing all engines. So, while there is investments, there is consumption, there is an MSME, agriculture, exports and investments. So therefore, I think this strength of the Indian economy will continue to grow despite global headwinds. Global headwinds we have to face. We have faced it in the past and will continue to face it, but I think India is in a strong position to handle it. Anurag Shah, ET. Thank you so much, ma'am. We missed this budget press conference in 2024, but thank you for continuing the tradition. No other FM did that. मैम, मेरा सवाल जो है वो जिस तरह से आपने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है बजट के अंदर, इंश्योरेंस सेक्टर में FDI की लिमिट 74% से बढ़ा के 100% की गई है, तो ये जो कदम लिया गया है, जो इंश्योरेंस के अंदर आप बदलाव करना चाहते हैं इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, जिसमें 2022 के अंदर इंश्योरेंस एक्ट अमेंडमेंट का एक ड्राफ्ट बिल लाया गया था जिसमें कंपोजिट लाइसेंस, वैल्यू एडेड सर्विसेज वगैरह सारी चीजें जोड़ी गई थी, तो वो कब तक आते हुए दिखेगा? क्या इस वित्त वर्ष में हम उसे देख सकते हैं? और जिस अभी कुछ वक्त पहले आपके द्वारा एक चिंता जताई गई थी एक प्लेटफॉर्म पे कि इंश्योरेंस की जो मिस सेलिंग हो रही है वो बड़ा कंसर्न है बैंकिंग प्लेटफॉर्म पे, तो क्या जो नए अमेंडमेंट आप ला रहे हैं, इंश्योरेंस एक्ट अमेंडमेंट जो नया आएगा, तो उसमें ये मिस सेलिंग के कंसर्न को भी आप शामिल करेंगे? इफ यू अलाउ मैम, सेकंड क्वेश्चन ऑल्सो, बिकॉज वी आर इंटरेक्टिंग विथ यू आफ्टर 2 years. मैम, दूसरा सवाल PSU जनरल इंश्योरेंस कंपनियों से जुड़ा हुआ है. हमने देखा पिछले कुछ सालों में कई सारे सरकार के द्वारा ऐलान किए गए PSU जनरल इंश्योरेंस कंपनीज में पहले लिस्टिंग की बात हुई, फिर मर्जर की बात हुई, फिर प्राइवेटाइजेशन की बात हुई, तो अब आखिर में PSU जनरल इंश्योरेंस पे सरकार का किस तरह से फोकस है? क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड जो कर्मचारी वो कहते हैं कि हम काफ़ी मोरली डाउन है क्योंकि एक सही दिशा नहीं पता चल रही कि आगे क्या होगा. अगर मॉरली डाउन हो कि नहीं हो, अच्छा प्रॉफिट के कमाने के स्तर पर अभी आप पहुंचे हैं. यस मैम. Am I right? यस मैम, वो सरकार के प्रयासों से. हाँ, नहीं, बिकॉज दे आर सरकार के प्रयास और कर्मचारी के प्रयास, सबके प्रयास की वजह से. मगर मॉरली डाउन हुआ वर्कफोर्स वो दिखाते नहीं. वर्कफोर्स जब मॉरली अप है
तभी प्रॉफिट का पॉसिबिलिटी होता है. सो मॉरली डाउन नहीं है. आई वांट यू टू also encourage them with your words. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Otherwise, I'll ask Nagaraju ji, Secretary. Thank you. There are two questions. One is FDI 100%. This has been announced by the Honorable Finance Minister in the Parliament that we intend to bring the law. We have to change the law. That we are going to intend. The internal governmental consultations we have almost completed. And then we will take the next course of action. Now, along with this, there are also other rules that govern how the investments will be made and the profits will be repatriated if there is FDI. That actually is including the management of the companies where the FDI investment is higher. That also will be part of the proposed amendment bills we are bringing to the Parliament. So once the Parliament approves, those rules also will be notified, so that there is everything, all the reforms that we intend to do in the insurance sector to improve the penetration as well as insurance density will be done through these reforms that we are contemplating and announced by the Honorable Finance Minister. And coming to, I just wanted to add one small point. You know, this is the first time all the general insurance companies have made profit. I think all of you know, this is the Bombay, everybody should remember this. After 8-9 years, this is the first time ever all insurance companies, public sector insurance companies, made profit. Never before. And they are all doing well. There is no, despite when they are making profits, why their morality is down, I don't know. Okay, please increase that. See, mis-selling, we sell large number of policies, both private sector and public sector. Mis-selling basically arises the complaints we receive when the banks are selling. They actually unsolicited persuasion of customers or giving through call centers, making them buy the products which they don't want to at that point of time. And then because the first year premium is higher and people forget about it, that's one. And then there is also a complaint that in some segments of population who do not actually require insurance products, they are also forced to buy when they go for credit. That's one. And then the business houses, some small industries, when they buy, when they take the credit, they are also asked to insure their businesses, including the machinery, plant and everything. And then house building also. And some cases where the house owners are persuaded to buy insurance for themselves for paying the installment. But while this has been there, but now if you notice it, large number of complaints have been reduced. Now we have introduced a policy, a 1-year lookout policy. In fact, we encourage our insurance companies to extend this lookout policy to 1 year, 1 month to 1 year. Now, most, including private sector, they are now doing that. If somebody wants to surrender the policy, please surrender. You get a full amount. There is no questions asked. That we have done. And then we also introduced in the public sector companies, including LIC, a callback. Once the product is sold, a callback will go to the customer whether actually he is happy with the product or he want to surrender. That is also there. We have also asked private sector companies also to do the same callback so that the mis-selling is not there. Those who want to buy, please let them buy. This is, and we are also asking in the banks and other financial institutions, only the trained agents in the insurance segment, only they will be able to sell, not others. These are the measures we have taken to reduce the complaints and also whenever complaints received to redress them. Correct. We have, in fact, our public sector companies are doing it. In fact, private sector also, we have asked them to up to do for 1 year. Yes, composite license is part of the reforms Honorable Finance Minister has announced. Next, Ekta Suri from Z Business. Good afternoon, gentlemen. Good afternoon, ma'am. Ma'am, Ekta from Z Business. मैम मेरा सवाल आपसे ये होने वाला, आपने बहुत राहत दी है इस बजट में एक आम नागरिक को, लेकिन कहीं ना कहीं बजट से पहले भी एक एक्सपेक्टेशन थी कि जीएसटी जो इंश्योरेंस पे है वो कम हो ताकि विकसित भारत का जो टारगेट है 2047 में इंश्योरेंस फॉर ऑल
वो पूरा हो, तो हम वो कब तक कम होते देख सकते हैं? और दूसरा ये कि लोगों का विश्वास जो है वो कोऑपरेटिव बैंक से थोड़ा सा उठ रहा है, क्योंकि हाल ही में जो घोटाला हुआ न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के, तो उसको लेकर सरकार क्या कदम उठा रही है? एक डिपॉजिटर को 5 लाख से ज्यादा का अगर इंश्योरेंस कवर मिल सकता हो, ये 2 सवाल मैम। जीएसटी के मामले में हमारे एमओएस वो कमेटी को देखते हैं, रेट रेशनलाइजेशन का विषय और इंश्योरेंस का विषय भी चर्चा में आया जीएसटी काउंसिल में। मैं उन्हीं को कहती हूँ कि ही कैन गिव यू अ रिप्लाई टू योर क्वेश्चन। जो इंश्योरेंस पे जीएसटी का विषय है, पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि जीएसटी का रेट घटाना बढ़ाना, किस पे लगना किस पे नहीं लगना, एक काउंसिल का विषय है और काउंसिल इसको तय करता है। जो सब्जेक्ट पे आप बात करें उस पर जीओएम बना हुआ है, उस पर अभी निर्णय होना बाकी है। हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो निर्णय कब तक आएगा? अब वो काउंसिल को निर्णय आएगा, जीओएम का निर्णय आएगा, उसके बाद ही आपके सामने आएगा। एंड सर, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑन न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक घोटाला जो हुआ है। Now RBI is seized of the matter. Now only they have taken the actions. We are not going to comment on that. Thank you. Anurag But, Joshi, the, next. but the point about increasing the insurance, that is under active consideration. As and when the government approves, we will notify. तो सर डिपॉजिटर इंश्योरेंस 5 लाख से ज्यादा बढ़ाया That's जाए? what I'm talking about. That Anurag. this is under the consideration of the government. As and when the decision is taken, we will inform. सर कब तक हो सकता है वो डिसीजन? मैं रियली सॉरी इफ आई एम आस्किंग Yeah, अ you're फॉलो। pressing it too much. Yeah, If we have an just one answer, minute. we'll give it to you. सॉरी। Congratulations on the budget, ma'am. My questions relates to the lagging pace of credit growth in the economy, and the pace of credit growth has lagged deposit growth for several quarters. Now I'm aware that the government in the budget you had announced for MSMEs you have increased the guarantee cover, which will release 1.5 lakh crore rupees over the next 5 years. And RBI has also taken measures, it's taken liquidity measures, it's cut the CRR in December. My question is that is there scope for further liquidity and monetary measures to alleviate the cash shortage which still exists in the banking system and also improve credit growth in the economy? My second question is that the fund of funds, 10,000 crores for startups, how are you looking to operationalize that? See, I think all of you know the credit growth this year is very good. I think one of the best years of credit growth in the financial system. We are doing well, including the MSME. We have almost about 16%. In retail also is good. Okay, a couple of months it was a little tempered down, but now it has picked up. Further liquidity measures, I think now we expect the 2 measures announced by the Honorable Finance Minister in the budget, the income tax relief, that will give us about anywhere between 35 to 45,000 crores into the banking system, which may actually increase the ability of the banks to lend more to the private sector. That's one. Coming to the 10,000 crores for the startup fund, last time when the Finance Minister announced in the budget, we could, with the 10,000 crores, we could actually lend revolving 90,000 crores to the startups. This time also, we are actually trying to leverage both equity as well as debt, and trying to bring our own banks to complement this fund, and may increase anywhere between 20 to 25,000 crores to the startups. So all the startups will get actually benefited. Mr. Ashish. Maharashtra Times. Then we have Ram Kumar. या वैभव वर्जे फ्रॉम महाराष्ट्र टाइम्स। एक सवाल ऐसा है कि जो बार बार आपके स्पीच सुनते हुए भी मन में आ रहा था कि एक ओल्ड रिजिम एंड न्यू रिजिम ये जो चल रहा है, तो अगर आप न्यू रिजिम में इतना ज़्यादा लोगों को सहूलियत दे रहे हैं और एंड यू इंक्रीज द टैक्स फ्री इनकम ऑल्सो, देन अभी तक क्या सरकार को
का क्या है इस पे की, ओल्ड या न्यू? देखिए, हमारा तो ये प्रयत्न रहेगा कि न्यू रिजीम इतनी अच्छी और सहूलियत वाली हो कि ओल्ड रिजीम की आवश्यकता ही ना रहे, लेकिन हम ऑप्शंस को भी नहीं करना चाहते बंद, क्योंकि धीरे धीरे जो प्रयास हमारा रहा, उस प्रयास में जो पहले न्यू रिजीम आई और उसको रिलैक्स करके फिर उसके बाद वो 75% जो करदाता हैं वो उसमें आ चुके हैं। और हमें आशा है कि इस बार जो वित्त मंत्री जी ने बोनेंजा दिया है न्यू रिजीम को, तो उससे बाकी के भी आ जाएंगे। तो कुछ विशेष छोड़ के जिनका बहुत ज़्यादा, जैसे मान लो किसी का हाउसिंग का है और उसका पास रेंटल इनकम है और उसका बहुत ज़्यादा लोन है, तो उस स्थिति में शायद उनको ओल्ड रिजीम सूट करे, नहीं तो ओल्ड रिजीम प्रैक्टिकली नहीं अपने आप चली जाएगी। लेकिन हम व्यवस्था को रखे हुए हैं और बेसिकली आप देखें उसका जो प्रयत्न सरकार का यही रहा है कि आप माइक्रो मैनेजमेंट ना करें। हम जब हम सिंप्लीफिकेशन की बात करते हैं तो यदि बहुत सारे डिडक्शंस, बहुत सारा वो करेंगे तो उसमें एक तो डिस्प्यूट्स भी आएंगे और दूसरे माइक्रो मतलब मैनेजमेंट हम कर रहे हैं। इससे अच्छा तो अप फ्रंट ही हम रिलीफ दे दें और उसी तरह की प्रक्रिया रही है। तो इंडिविजुअल साइड में तो मुझे लग रहा है कि न्यू रिजीम विल बिकम, अभी भी वो डिफ़ॉल्ट रिजीम है। आप यदि कोई भी खोलेंगे साइट में तो पहले न्यू रिजीम आएगी, आपको ओल्ड रिजीम के लिए ऑप्शन मतलब एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो अभी भी वो डिफ़ॉल्ट है। थैंक यू। मिस्टर दवे फ्रॉम गुजरात समाचार। कुनेश देव फ्रॉम गुजरात समाचार। मैम, आपका इस टाइम पे बजट बहुत अच्छा है, मिडिल क्लास के लिए रिलीफ की बहुत सारी मिली है, मगर सर मैम मुझे एक प्रश्न ऐसा सोच रहा हूँ कि हर टाइम हर चीज़ की बात बोल रहे थे। मेरा जीएसटी से क्वेश्चन है, उसमें पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाने की बात बहुत टाइम से चल रही है, मगर अभी तक आप लोग ने उसके पे कुछ निर्णय ही नहीं लिया हुआ है। नहीं, वो क्वेश्चन एमओएस आंसर करेंगे, मगर पेट्रोल और डीजल के ऊपर केंद्र सरकार से प्रश्न पूछने का कोई कुछ बचा नहीं। इकोनॉमिक में बहुत अच्छा फर्क पड़ सकता है ना। हमने तो प्रावधान कर चुके हैं कानून में कि पेट्रोल और डीजल आना है, जब भी वो आएगा रेट के साथ उसको कानून में प्रावधान कर बैठे हैं हम। स्टेट्स को निर्णय लेना पड़ेगा। फिर भी आप बोलिए। मैंने पहले भी बताया कि जीएसटी काउंसिल जिसमें स्टेट और केंद्र दोनों की भागीदारी है और सभी स्टेट के वित्त मंत्री उसमें सम्मिलित रहते हैं और जीएसटी पेट्रोल पे डीजल पे लगना है नहीं लगना है ये जीएसटी काउंसिल तय करते हैं और जीएसटी काउंसिल में इस पे कई बार डिस्कशंस हुए हैं, लेकिन अभी निर्णय पे हम लोग नहीं पहुंच पाए और जिस दिन काउंसिल निर्णय करेगी भारत सरकार कानून उस पर ला देगी। भारत सरकार की क्या भूमिका है? राज्य तो अलग भूमिका है, लेकिन आप काउंसिल के मेंबर है, आपकी उसके ऊपर क्या भूमिका? What भूमिका है? I am telling you, कानून. You may ask him also, but the point remains. Oh, you think he's giving a different answer? No, he was asking. I don't mind. Huh? I'm asking him as chairman of the. He's not the chairman of the GST Council, sir. He's heading a committee which looks into the compensation cess and उसके ऊपर क्या करना है। और मेंबर भी है हमारे साथ, उनसे नहीं, उनसे ही अगर जवाब चाहिए तो वही जवाब देंगे, कोई परवाह नहीं। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू। ऑलराइट, देखिए मैडम है चेयरमैन। आप जवाब दे दीजिए। व्हाट इज सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैंड ऑन द डिमांड ऑफ इंक्लूजन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन द जीएसटी? देखिए, जीएसटी काउंसिल एक संवैधानिक संस्था है और एक ऐसा उदाहरण जीएसटी पेश कर रही है कि जहां पर फेडरल स्ट्रक्चर में सभी स्टेट और केंद्र मिल करके निर्णय लेते हैं और कहीं ना कहीं आप सबको जानकर प्रसन्नता भी होगी कि सरकार, भारत सरकार सबके राय से जीएसटी काउंसिल जो काउंसिल में निर्णय होता है और अभी तक एक दो विषय छोड़ दें तो सभी का निर्णय वहाँ पर सर्वसम्मत से होता है। तो एक बहुत बड़ा उदाहरण है देश के लिए कि प्रदेश और केंद्र दोनों मिल करके निर्णय ले रहे हैं और जब काउंसिल निर्णय लेगा उसमें सभी मंत्री रहते हैं सभी स्टेट के, तो फिर भारत सरकार उस पर कानून लाएगी। इंट्रोड्यूस कर लीजिए। अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस से। मैडम, मेरा 2 सवाल था। पहला सवाल तो ये था कि कोऑपरेटिव बैंक का जो आपने कहा अंडर इन्वेस्टिगेशन है, चूँकि मुंबई सहित पूरे देश भर में कोऑपरेटिव बैंक्स का एक चलन सा चल पड़ा है, लोगों को नज़दीक रहता है काम करने में,
लेकिन क्या इससे भरोसा खत्म हो रहा है क्या लोगों का? कोऑपरेटिव बैंक में लोगों को खाता खुलवाना चाहिए कि नहीं खुलवाना चाहिए? दूसरा सवाल ये है कि आपके लगातार प्रयासों के बावजूद भी शेयर मार्केट जिस तरीके से फ्लैक्चुएट कर रहा है, गिर रहा है, क्या मार्केट में इन्वेस्टर्स का भरोसा भारत सरकार पर या उनके वादों पर है या नहीं? अजय, कि पहला आपका प्रश्न कोऑपरेटिव सेक्टर के जो बैंक्स हैं उनके बारे में है। आपको ये ध्यान हो कि ये आरबीआई का जो इसमें रेगुलेशन है, पहले वर्षों में पहले नहीं होता था, अब ये आरबीआई के रेगुलेशन में है। और जो भी अपना अकाउंट खोलना चाहता है, आज भी पूरे देश में जो कोऑपरेटिव बैंक हैं वो सुदृढ़ व्यवस्था में है। किसी में अगर कोई कमजोरी आती है तो रेगुलेटर का काम ही होता है कि जिसमें अगर कोई भी कुछ कमजोरी आई है उसके ऊपर रेगुलेटरी एक्शन लिया जाए। लेकिन एक बैंक के एक्शन से पूरे सेक्टर के बारे में निर्णय लेना वो सही नहीं है। विभिन्न राज्यों में विभिन्न कोऑपरेटिव बैंक, विभिन्न स्तर के बैंक बड़ी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, उसके बारे में कहीं पर भी छोटा सा भी संशय नहीं होना चाहिए। इट इज ए वेल रेगुलेटेड सेक्टर नाउ, इस बात को हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। दूसरा प्रश्न कि शेयर मार्केट में ये किसी नीति के ऊपर शेयर मार्केट नहीं चलता है। शेयर मार्केट जो है वहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है, हमारा डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट क्या आ रहा है, क्या आगे के क्या ग्रोथ की क्या संभावनाएं हैं, उसके बारे में है। और एक सुदृढ़ता आई है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर काफ़ी मात्रा में है, म्यूचुअल फंड काफ़ी मात्रा में है। लेकिन जो देश के बाहर की परिस्थिति है, जो एक अनसर्टेनिटी जिसे कहते हैं, उसके चलते हुए और एक जहाँ पर होता है कि कुछ वो एक अनसर्टेनिटी के चलते वो जो बड़े मार्केट हैं वहाँ पे जाना चाहते हैं, तो ये एक शॉर्ट टर्म में का उसका प्रभाव है और ऊपर नीचे होना ये स्वाभाविक है मार्केट में। सरकार से तो लोग अमूमन ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक स्थायी वॉल की तरह वो खड़े रहेंगे अगर इन्वेस्टर्स चूँकि देश के हैं तो। चूँकि ये मुंबई में है इसलिए ये सवाल था कि चूँकि पिछले एक महीने से लगातार लाखों करोड़ रुपए मुंबई में जिस तरीके से इन्वेस्टर से गए हैं, तो गवर्नमेंट इसके लिए भी कुछ तरीके के जो शॉर्ट टर्म प्रयास या लॉन्ग टर्म प्रयास कर रही है ताकि इस तरीके की चीज़ों को, अगर बाहरी दुनिया में अगर कोई दिक्कत हो रही है तो भी देश का शेयर मार्केट सुरक्षित रहे या दिक्कत ना हो, इसको लेकर के। देखिए, इसमें जो मार्केट का रेगुलेशन है वो रेगुलेटर करते हैं और मार्केट सुचारू तौर पे चले कि उसमें कहीं पे कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। मार्केट में जो इन्वेस्टर जाना चाहता है, जब वहाँ से निकलना चाहता है, सुचारू रूप से हो, उसकी पूरी व्यवस्था है। उसमें कहीं पर भी उसमें कुछ आगे पीछे वहाँ पर नहीं हुआ है। अब रही बात कि अगर हमें खाली अपने देश के ही स्टॉक मार्केट को नहीं देखना है, आपके सारे इमर्जिंग मार्केट के जो स्टॉक मार्केट है उसके ऊपर भी आप ध्यान दीजिए कि किस मार्केट में बढ़ रहा है। पहले ये था कि अगर जो विकसित देश के मार्केट थे वो नीचे जाते थे तो भारत का मार्केट भी नीचे जाता था, ऊपर जाता था। उसमें बदलाव आया है पूरी तरह से, लेकिन पूरी तरह से डीकपल हो गया है वो भी नहीं होता है। तो ये एक मार्केट बेस्ड है कि जहां पर भारत सरकार को या किसी भी सरकार को कब जरूरत पड़ती है कि वो मार्केट में कहीं कुछ करे, जहां पर कोई मार्केट फेल्योर हो। यहाँ पर कोई मार्केट फेल्योर की बात नहीं है, मार्केट सुचारू रूप से चल रहा है और उसमें कोई परेशानी की बात नहीं। Yes, please. Please introduce yourself. हेलो, मैं लितकेश शर्मा, नवभारत न्यूज़पेपर से। मैम, मेरा ये सवाल था कि महाराष्ट्र के विपक्ष के नेताओं का कहना है कि महाराष्ट्र के लिए बजट में ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा टैक्स कलेक्शन मुंबई से जाता है, महाराष्ट्र का एक मेजर रोल है इकोनॉमिक ग्रोथ में, लेकिन रिटर्न में उन्हें कुछ ज़्यादा नहीं मिला। आप क्या कहना चाहती हैं इस बारे में? ये एक उदाहरण दूंगी। वधावन पोर्ट का 76,000 करोड़ का डिसीजन किस गवर्नमेंट ने किया? नरेंद्र मोदी जी का गवर्नमेंट ही किया ना। वो एक बड़ा प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के लिए, इफ सिंसियरली महाराष्ट्र का पोटेंशियल को समझ करके उस निर्णय लेना है तो दशकों पहले लेते थे, मगर उस निर्णय माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही हुआ। सो महाराष्ट्र का प्रामुख्यता एज अ बिजनेस एंड इंडस्ट्री फ्रेंडली स्टेट हम कभी भूलते नहीं हैं। और इसके अलावा डिफेंस में
डिफेंस प्रोक्योरमेंट में आत्मनिर्भरता होना है। इसके लिए डिफेंस प्रोडक्शन में जितने भी इंडस्ट्री एंगेज्ड है उनके साथ हम पॉलिसी के तहत सपोर्ट करते हैं, उनको हर किस्म का फैसिलिटी बनाकर देते हैं। उसके कारण आज भारत देश में एक्सपोर्ट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट और उससे कमाई मोर देन 24,000 करोड़, अभी शायद उससे भी बढ़ा हुआ है तो वो महाराष्ट्र का इंडस्ट्रियल फ्रेंडली और केंद्र सरकार उसके साथ समर्थन करके डिफेंस प्रोडक्शन का अच्छा केंद्र महाराष्ट्र भी बने। ऐसे पॉलिसी के कारण महाराष्ट्र में वो डिफेंस प्रोडक्शन की एक्टिविटी अच्छा हो रही है। तीसरा, आज आप हमारे प्रोग्राम में भी देखे होंगे सेवरल MSMEs इधर केंद्र सरकार की बैंकों के द्वारा, हमारे पॉलिसी के द्वारा, MSME सेक्टर के पॉलिसी के द्वारा अच्छा उनका लिक्विडिटी और असिस्टेंस क्रेडिट फैसिलिटेशन हो रही है। उसके द्वारा इंडस्ट्री भी बलबूते पर आगे बढ़ रहे हैं। सो महाराष्ट्र का केंद्र स्थान अगर हम इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए पूरे रिकग्नाइज करते हैं और हमारी पॉलिसी का बेनिफिट महाराष्ट्र को जरूर मिलता है। Please introduce it. Hi, Minister. Archana Shukla from BBC News. Two quick questions. One, what is the kind of impact you are anticipating and assessing because of the US reciprocal tariffs on Indian businesses and on the government's fiscal deficit targets? The second question is, just at a time when the government and the RBI both are stepping forward to support more spending in the domestic economy, how is the government attempting to manage the spillovers of rising inflation because of geopolitical pressures and tariff wars around the globe? Thank you. Inflation has been well within a certain band, and the last declared numbers have shown that it has come down very close to 4. So inflation has been monitored regularly, both from the supply side and also for the Reserve Bank from the monetary side. And that is one of the reasons I would think the policy would give its written statement, MPC's written statement. But that is one of the reasons why the RBI has chosen to cut the interest rate. This time you heard it after about nearly 4 or 5 years. So inflation related management of supplies and also the monetary policy are working in sync, and that is going on, I think, in order to favor the growth cycle. But ma'am, with the threats of... I thought you asked me 2 questions. I've answered only one. Just a follow-up on this, ma'am. Just with the threats of imported inflation because of the global tariff wars, is there something that the government would be planning to do more? Inflation management covers that, doesn't it? I've answered about the inflation management. And the other question about tariff and reciprocal tariff that US is talking about, India has already for the last 2 years taken several measures which we continue to take. Even this budget shows that there's a lot of rationalization happening in terms of basic customs duty and their application. Safeguard duties or any anti-dumping duties that we levy are also periodically reviewed, and this budget has shown that there is a major step forward in terms of reforming India's customs duty and that regime which governs it. We are building to be an investor-friendly country, and as a result, the duty cuts and the rationalization that has been announced is a continuing process, and we shall keep doing that. But if there's more, Tuhin can add. Actually, a couple of things. I'll draw your attention to the joint statement that we had between Prime Minister and President Trump. And I think that there is a para on trade and investment. I'll draw your attention to that. Both the US and India have agreed to have a bilateral trade agreement by fall. So I think that is one. And I think the statement also highlights the reciprocal measures on both sides which they have taken for facilitating each other's trade. The second, on reciprocal tariff, it's in the form of a bill which is yet to come. It's an intent, and how and what form it will take, we don't know yet. Third, as FM mentioned, that we had lots of rationalization. If you see the industrial goods, we have about 6 out of 8,000 tariff lines, about 6,000 tariff lines are below 10%.
most of the US imports into India, the first 30 most important imports into India, they have a duty rate ranging from 2.5, nil, 0.5, 2.5 and so on. It could be just a very few items, maybe we can count on fingers where there may be a higher duty, and so do we have also certain higher duties on textiles and apparel, for example, in US. So I think those are the things probably will get sorted out and will be highlighted during the negotiations while negotiating BTA. Thank you. Last. Good afternoon, Ashoka Mitran from The Hindu. So that IT relief that's been given, the revenue foregone is about 1 lakh crore estimated, and the tax to GDP ratio stays at an average of around 10%. So how effectively and how quickly does the ministry expect that revenue foregone to turn around? Well, it starts from 1st April, right? Yeah. After the bill gets passed.